and also 12th man of KALIKA BARDEZ. Please come in commentary box. Lineup of BARDEZ KALIKA Warriors: Lakshmikant, Ashish, Pradosh, Yashwant, Siddharaj, Gaurish, Pritesh, Saish, Amogh, Aryan, Gopal and Nagesh, Rajat, Vivek, Kunal. इस श्रृंखला का पहला क्वार्टर फाइनल मैच जो होने जा रहा है स्वस्तिक वॉरियर वर्सेस बारदेज वॉरियर्स, दोनों टीमों के बीच में यह मैच हाई वोल्टेज रहेगा। दोनों टीम अपने आप में प्रबल दावेदार माने जाते हैं सेमीफाइनल के लिए। और इस इनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे आशीष, जो बारदेज वॉरियर की इनिंग की ओपनिंग करेंगे, और उनका साथ निभाने के लिए मैदान में उतरे हैं लक्ष्मीकांत। दोनों की जोड़ी, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे उसी तरह की जोड़ी मैदान में दिखती हुई, दोनों में सही सूझबूझ, सही तालमेल और एक अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन करते हुए दोनों ओपनिंग बल्लेबाज। और गेंदबाज का नाम प्लीज बताएं। ओमकार, शुरुआत ही नाम से हो रही है, ओमकार। इस गेंद की पहली गेंद लेके ओमकार का सामना करेंगे आशीष। गेंदबाज ओमकार के कंधों पे पहली गेंदबाजी का, पहली ओवर का दारोमदार, उनका सामना करेंगे आशीष। और यहां पे अंपायर का इशारा, मैच शुरू होने जा रहा है, चालू होने जा रहा है। और इस मैच का आनंद उठाने के लिए मैदान में 50,000 दर्शक खचाखच भरे हुए पहली गेंद का सामना करेंगे आशीष। आशीष की पहली गेंद पॉइंट की दिशा में खेल दिया, एक रन चुराने में कामयाब, ऑफ साइड में खेलते हुए अपने टीम का और अपना खाता खोलने में कामयाब होते हुए आशीष। और इसी के साथ एक गेंद के साथ खाता खोलते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा है 1 रन बिना किसी नुकसान के। ये बाहर की गेंद, इसके साथ छेड़खानी करना चाहते थे मगर गेंद सीधी निकल के गई और विकेट कीपर के दस्तानों में बस गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, मगर बाहर की गेंद के साथ लक्ष्मीकांत छेड़खानी करना चाहते थे, रूम बना के खेलना चाहते थे, मगर बीट होते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के स्वरूप में मिलती हुई स्वस्तिक वॉरियर के टीम के लिए अगली गेंद का सामना करेंगे लक्ष्मीकांत। ये जोरदार घुमाना चाहते थे, लेग साइड में खेल के निकाला है, 1 रन पूरा करते हुए दूसरा रन के लिए भागना चाहते हैं और दूसरा रन चुराने में कामयाब। छोटी सी मिसफील्डिंग का प्रदर्शन यहां पे होता हुआ, दोनों फील्डरों के बीच में कोई तालमेल नहीं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसी तरह से 1 रन के साथ 2 रन चुराने में कामयाब। और ये जोरदार प्रहार, रन सीधा, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा पार, रन जरूर मिलेंगे 6 और इस 6 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान के। गेंद जैसे ही दिखी अपना मन बना लिया
और प्यार के साथ एक थप्पड़ मारते हुए गेंद को सीधा पार करा दिया सीमा रेखा और 6 रन बटोरने में कामयाब आशीष। और ये बाहर की गेंद, हल्की सी अपील होती हुई, अंपायर पे दबाव डालने की कोशिश, मगर यहां पे देखना है कि क्या डिसीजन होता है। और बैट्समैन निकलते हुए पहला झटका लगता हुआ आशीष के रूप, लक्ष्मीकांत के रूप में पहला विकेट का पतन बारदेश कालिका वॉरियर्स का। पहला विकेट चटकाने में कामयाब ओमकार। और मैदान में उतरे हैं खुद कप्तान, अपने कंधे पे पूरा दारूमदार उठा के। प्रदोष, बस देखना यह है कि प्रदोष का बल्ला कितना बोलेगा। सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं अभी तक। और ये गेंद दिशाहीन, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ वाइड के स्वरूप में। अंपायर ने कोई देर ना करते हुए वाइड का डिसीजन दे दिया। दिशाहीन गेंदबाजी। इस ओवर की आखिरी गेंद जिसका सामना करेंगे प्रदोष। फिर से वही गलती दोहराते हुए गेंदबाज ओमकार, दिशाहीन गेंदबाजी और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, और इस वाइड के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की जिसका सामना करेंगे प्रदोष। फिर से देखना यह है, ये वाइड की हाईट्रिक पूरी होती हुई, इसी के साथ 12 रन बनते हुए बारदेश वॉरियर के लगातार 3 बार एक ही दिशा में दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए ओमकार। बहुत लंबा चलता हुआ ओवर, लगभग 10 गेंदें फेंकी जा चुकी है अभी तक। और रक्षात्मक तरीके से खेल दिया है, 1 रन चुराने में कामयाब। हाथों ही हाथों में रन चुराते हुए अपना खाता खोला प्रदोष ने। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज कुणाल की पहली गेंद, गेंद जोरों के साथ ऐसी जगह टकराई कि गेंद भी खुद शर्माई कि भाई मैं कहां टकराई, और उस गेंद का स्वागत करते हुए प्रदोष खेलने के लिए तैयार। अगली गेंद, रक्षात्मक तरीके से धकेल के 1 रन निकालने में कामयाब। दूसरा रन चुराना चाहते हैं दोनों बैट्समैन, बल्लेबाजों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल। हिरन की फुर्ती के साथ दौड़ते हुए 2 रन चुराने में कामयाब, और इस 2 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक शॉट, यहां पे 1 रन शॉट है, इस वजह से 14 रन। कुणाल
की तीसरी गेंद का सामना करेंगे प्रदोष। दर्शक जिस हवाई फायर की मांग कर रहे हैं वो अभी तक देखने नहीं मिला है दोनों बल्लेबाजों के बल्लों से। और ये जोरदार प्रहार, जैसे कि मैंने कहा था, ये बहुत अच्छा फील्डिंग का नजारा। 6 रन के जाने वाली गेंद को रोक लिया और अपने टीम के लिए 5 रन चुराने में कामयाब होते हुए फील्डर उन्होंने 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। और ये घातक भी साबित हो सकता था प्रदोष के लिए अगर ये कैच लपका जाता तो। कुणाल की अगली गेंद का सामना करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से खेल दिया, कलाइयों के सहारे 1 रन चुराने में कामयाब आशीष। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ, दूसरे ओवर की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 2 गेंदें आनी बाकी है। और ये जोरदार प्रहार, गेंद सीधा सीमा रेखा पार, रन जरूर मिलेंगे 6। इसी तरीके से यहां पे पहला छक्का लगता हुआ प्रदोष के बल्ले से और स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो हवाई फायर की मांग हो रही थी दर्शकों की तरफ से, उसका पहली किस्त जो अदा की है प्रदोष वाल्के ने। और दूसरे को भी मारना चाहते थे मगर यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया और 1 रन चुराने में कामयाब। लेग साइड की दिशा में 1 रन चुराते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ना तू हेजे घाल न्ही आयपीएलाचे म्युझिक घाल ताका कॉपीराइट ते ओके रे पूण कित्याक ते कंटिन्यूस जाता न्ही सो मोस्टली आतां कितें जालां की सावंड येता मरे आनी मागीर युट्यूबाचेर कंप्लेन येता आनी बंद जाता म्युझिक घालपाचें ना सोमतें नाल्यार गोवन बिवन कितें घालपाचें जो बायले यो बी लावपाचें म्हाका खूबदां फाटी जालां थोडे कितें आसा कमेंटेटर हाडटा मायक ऑन करता ओके ताजेर इवन लायले न्ही डायरेक्ट ते युट्यूबाचेर आयकपा येता कॉपीराइटसाची इन्फ्रिंजमेंट येता न्ही। यहां पे छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ प्रदोष वाल्के और आशीष, गेंदबाज रजत, अभी तक इस श्रृंखला में बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है रजत ने। रजत अपनी पहली और अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेके मैदान में उतरे हैं। रजत का सामना करेंगे प्रदोष। खेलना चाहते थे मगर गेंद सीधी गई विकेट कीपर के दस्तानों में और यहां पे एक वाइड अतिरिक्त रन मिलता हुआ इस गेंद को वाइड करार किया गया अंपायरों की तरफ से। और इसे हवा में उड़ाया है, देखना यह है 2 फील्डर मौजूद है और ये ड्रॉप और इसी के साथ दूसरा रन चुराने में भी कामयाब। गेंद बहुत ही हवा में थी, ऊंची जा चुकी थी और दोनों फील्डरों में सही तालमेल की कमी और एक आसान सा कैच छोड़ दिया प्रदोष वाल्के का। त्याचबरोबर टोलवलेला चेंडू, चौथा चेंडू रजत याचा प्रदोषने फटकावलेला आहे आणि एक चोरटी धाव घेण्यात सफल होत आहेत ते प्रदोष वाळके। ऑफसाइडच्या दिशेने
खेळून 1 रन काढण्यात सफल होत आहेत ते दोन्ही फलंदाज. तीन चेंडूचा खेळ संपतोय आणि जोरदार टोलवलेला चेंडू हवेत खाली. त्याचबरोबर दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू जाते ती सीमारेषा पार. 4 रन मिळत आहेत ते कालिका वॉरियर्स संघाला आणि ह्या 4 रनाच्या जोरावर संघ जाऊन पोहोचतो तो 32 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. चहा पिलायस का? हा त्याकाच लागून कॉफी कॉफी बरी. आणि दिशाहीन गोलंदाजी आणि पंचांचा निर्णय वाईड आहे. त्याचबरोबर एक अतिरिक्त धाव सुद्धा मिळते ती बार्देस वॉरियर संघाला आणि ह्या एका अतिरिक्त धावेच्या जोरावर संघ पोहोचतोय तो 33 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणि जोरदार टोलवण्याचा प्रयत्न पण चेंडू जातो तो सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. चेंडूला छेडण्याचा प्रयत्न करताना प्रदोष पण सफल होताना दिसले नाहीत. आणि हा जोरदार टोलवलेला चेंडू जातो तो सीमाचे बाहेर आणि 6 रन मिळतात ते. ज्याप्रमाणे मी मगाशी सांगितलं होतं की छत्रपतीचा छावा आणि इथे मिळाल्या 6 धावा. या 6 धावांच्या जोरावर स्कोर जाऊन पोहोचतोय तो 39 एका गड्याच्या मोबदल्यात. 39. 3 षटकाचा खेळ इथे संपलेला आहे आणि 3 षटकाच्या नंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 39 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. बॉलर नेम प्लीज. विवेक यांचं आगमन झालेलं आहे. तर गोलंदाजीसाठी संघाच्या कॅप्टनने जबाबदारी दिली आहे ती विवेक यांना आणि विवेक एक जिम्मेदार गोलंदाज मानले जातात. अनुभवी गोलंदाजीचं प्रदर्शन करता करता ऑफ साइड कव्हरच्या दिशेने टोलवलेला चेंडू ग्राउंड होता होता गेला सीमारेखा पार आणि जरूर इथे 100% यांना 4 धावा मिळतील आणि ह्या 4 धावाच्या जोरावर स्कोर जाऊन पोहोचतोय तो 43 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. जोरात टोलवण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो तो सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि इथे निर्धाव चेंडू डॉटच्या स्वरूपात मिळतो तो विवेक याला. जोरात टोलवण्याचा प्रयत्न आणि ते एक स्टंपिंग करण्याचा एक छोटासा चान्स चुकवताना यष्टीरक्षक. तरी पण चेंडू हा डॉटच्या स्वरूपात मिळतोय तो विवेक याला. आणि हा जोरदार मारलेला टोला सरळ जातो सीमेच्या बाहेर आणि इथे मिळतात त्या 6 धावा. मगाशी मी बोलल्याप्रमाणे छत्रपतीचा छावा आणि परत मिळाला इथे 6 धावा
आणि या 6 धावाच्या जोरावर स्कोर पोहोचतोय तो 49 आणि ते 4 धावा. अंपायर यांनी 6चं डिसिजन चेंज करून 4 दिलेलं आहे. 4 धावा इथे मिळत आहेत त्या आणि 1 शॉट ऑफ दी ओव्हर. टोलवण्याचा प्रयत्न, एसटीच्या बाहेरचा चेंडू पण मारण्यात असफल राहिले आशिष. परत एक डॉट चेंडू, बॅक टू बॅक 2 चेंडू डॉट करण्यास सफल होत आहेत ते विवेक. ह्याचबरोबर 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतो. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतो आणि त्यावर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते 47 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. इस पहले क्वार्टर फाइनल मैच की आखिरी ओवर जो लेके आए हैं गेंदबाज यश. अरे ये तो दूसरी टीम का यश है. पहली टीम का यश जो इसका नाम आतंक है अभी तक मैदान में नहीं दिख रहे. ये दूसरा यश जो मैदान में उतरा है गेंदबाजी के लिए. और यहाँ पे यश का सामना करेंगे प्रदोष. इसे खेलना चाहते थे, गेंद सीधा पैर पे टकराई और यहाँ पे 1 रन चुनाने में कामयाब. और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और इसे खेलना चाहते थे 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ 49 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 4 गेंदें आनी शेष है. अगर दोनों बल्लेबाज मन बना ले तो पिछली मैच का स्कोर बनाना कोई मुश्किल का काम नहीं. 4 गेंदें शेष है. ये एक दिशाहीन गेंद जो सीधी लेग साइड की तरफ से निकलती हुई वाइड के स्वरूप में 1 अतिरिक्त रन मिलता हुआ बारदेस वॉरियर. और इसी के साथ बारदेस वॉरियर के 50 रन पूरे. और ये जोरदार प्रहार निकलता हुआ सीधा 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 रेडबुल के सर से निकलता हुआ 6 रनों के लिए जोरदार प्रहार. प्रदोष वाल्के के बल्ले से निकलता हुआ करारा शॉट. अभी जिस तरीके से मैंने बोला था कि अभी भी 3 गेंदें शेष, पुरानी मैच का स्कोर याद कर सकते हैं और उसे वहां तक पहुंचाना इस बल्लेबाज के लिए कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं. अपने जमाने के एक माहिर बल्लेबाज अभी भी उसी जोश के साथ खेलते हुए और यहाँ पे मैच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता हुआ मैच के बीचों बीच और ये लेग साइड में दिशा इन गेंद को बस फ्लिक करके खेल दिया. गेंद सीधी निकलती हुई सीमा रेखा पार. रन जरूर मिलेंगे 4. लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से और 4 रन मिलते हुए बारदेस वॉरियर के टीम को. और इस 4 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 2 गेंदें आनी शेष.
मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं मेरे दोस्त। और इसे उठा दिया हवा में। देखना यह है कि ये कैच होता है या नहीं। यहां पे कैच छूट गई है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार, मगर वहां पे दो दो फील्डर उसके पीछे लगे, 2 रन चुराने में कामयाब। इस तरीके से 2 रन चुराए, तीसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, तीसरे रन के लिए भागते हुए ये पहला विकेट। तीसरा रन पूरे करने के इसमें अपने विकेट का अभी यहां पे आया है। बॉल बचे कितने? 2 काढले महाराज, 2 काढले बॉल हेने प्रदूषण काढले। बॉल कितले उरले? बॉल कितले उरले? 3 आयले ना रे ना रे, तो आउट झालो नाही तिसऱ्या रनाक. तिसऱ्या रनाक आउट झालो तो. अरे प्रदोष त्या तू रॉंग सांगता. 3 आयले. कितले आयले? 3 आयले. सांगता. यस यस, 3 रन मिलते हुए चौथे रन, आशीष बराबर, चौथे रन के लिए अभी यहां पे मैदान में उतरे हैं यश। यश का सामना करेंगे यश। ये 2 यश एक साथ देखना है दोस्तों, यहां पे क्या नतीजा निकलता है। यहां पे लास्ट गेंद, एक गेंद, और यहां पे मैंने जिस तरीके से आपको बोला था, यश को आतंक कहा जाता है, मगर स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। बस आप सभी दर्शकों का मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप उस छक्के का मजा नहीं ले पाए जो यश के बल्ले से निकलने वाला था। अभी देखना यह है कि इस गेंद पे क्या होता है। इसे खेल दिया आशीष ने 1 रन के लिए। देखना है 2 दौड़ सकते, 2 के लिए दौड़े, 2 के लिए दौड़े, 2 2 2 2 2 2 और ये 2 पूरे करते हुए, और इस 2 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 67, 2 विकेट के नुकसान पर। हर एक दर्शकों के दिल में वो उम्मीद थी कि मेरा यश आएगा, 2 छक्के लगाएगा, मगर किस्मत ने साथ नहीं दी यश की, उन्हें बॉल खेलने का मौका ही नहीं मिला, वरना मेरा यश जरूर आता और 2 छक्के जरूर लगाता। तू मोटिवेट
68 runs is the target. Please come fast, fielding side. Fielding side, match begin यात ग्राउंडार देवात. Requesting the fielding side to please make it fast on the field. Please time काडपाचो ना. It's taking too long for the fielding side to come on the ground. Batsman name please. Twelfth man match begin yo. Non-strike Sampath. On strike. Looks to be Suraj. Somebody from Swastik Warriors, please. Saurav. I guess he's Suraj. 12th man match begin yo. Swastik Warriors. Extra man नाल्या कोणी आसा जो नाव सांगपा शकता match begin yo. Very good start. We have to see and check the umpire's signal. Appeal from the bowler for a caught behind, but umpire was very much convinced that it was not a catch. Maybe the ball hitting the legs or the bat hitting the ground. Once again, going for the big hoik. He's bowling well here. Ashish
Two dot balls in a row. Very good start from the bowler. 68 runs means at least you require some sixes and boundaries at the start to give you a good start for this run chase. An important place of semi-final berth at grasp here. Both teams are very evenly balanced. Let's see Swastik Warriors. This time, once again, 3 dot balls in a row. I think what we have seen so far of Swastik Warriors, it's this man at the non-striker's end. The big man has the capacity to clear the boundaries and sixes at ease. More strike to this man, and I guess 68 runs will be very much at the close of the feet. So again, didn't time it that well. Fielders are pretty good of this team, BARDEZ KALIKA Warriors. So just a single of the 4th ball to get off the mark of this innings. Still 67 more runs required. So tomorrow's encounter is going to be some important match, and as also the semi-final that will take place. Here we are going to find one of the semi-finalists. At this moment, looking at this first over from Ashish, he has done a handy job with the bat by scoring good 14 runs. But then he has to do the job with the ball coming up at the top of the order. And so far he has done a fabulous job, and it is this man on the screen that will decide where the match is heading and who is going to make it into the semi-finals. Sampath is the man. Powerful striker, big hitter, on strike for the first time in these quarterfinals. This is the first one. I told you this guy can change the match within no time. You bowl him short, bowl him full. If you bowl him in his arc, the ball is going to fly across for sixes. First 6 for Sampath. First flat 6. No ground is going to be big enough for this man if he connects it off the meat of the bat. This time also plays it nicely. He will get single, and good thing he will keep the strike of the next over. That's the best thing to happen after completion of 1 over. The score is just 8 because of the 6 from Sampath, 8 without loss. 60 runs are required in another 24 balls. What a great setup. We started off very well with the Swastik Warriors first match, and they were playing the first match and they are playing the last match as well. Last match of the day. First they won against Sanskrit Cricketers, and now they have to play these quarterfinals against BARDEZ KALIKA Warriors. So far the match is slowly poised and tilted towards the bowling side. 60 runs is not easy at this time of the hour when the sun has gone down and the ball does not fly across for the sixes and boundaries. But this person, this batsman who is on strike can make it possible for them, can make it possible for Swastik Warriors. They have made a good comeback by scoring some good targets, good totals on the board, and also chasing few. Now it's the opportunity for them, and a big opportunity to make it big in this big cup, Daivadnya Cup 2023. In comes the second over. Gaurish. This is pretty good bowling here. Decent bowling, not bowling in his arc, just bowling outside of stump. Sampath has decided that he's going to go all out. There is not going to be any second thought, second approach in his mind. It's just hit out or get out. Pradosh is guiding his bowlers from behind the wicket, and I guess you cannot talk while the bowler in his run-up.
This is a big one. The big man strikes the second big one of this quarterfinals. Sampath is the man. Second six of this quarterfinals for Swastik Warriors and his bat. Nothing wrong with the delivery, but it's just like you miss by an inch, you miss by a whisker, and the boundary also is going to cross the distance in meters. Again, this might be a catch. Big catch of this match, and yes, Sampath has gone back and Gaudesh strikes. Sampath was going for the second big one of this over. Could not get the elevation, could not get the distance, and he departs after a wonderful clean catch here from the fielder. Big wicket of this match goes back in the pavilion at the team total of 14. 14 for the loss of one Swastik Warriors. But whichever batsman comes here at this stage, he has no option. Target is a pretty good one. It's not an average total. It's above par total here posted by BARDEZ KALIKA Warriors. And that's the reason you can see whichever batsman comes onto the wicket, he will be with added pressure on his shoulders. In comes Yash. Yash from Swastik Warriors. Pradosh is marching his troops. You can see he's taking time to set the field where exactly he wants. He must have read the players. He must have read the batsmen from outside. So Gaudesh, so far 3 balls. He has taken all important wicket in spite of giving that 6 of the second ball. Well, he will not mind that if a 6 is given to batsman of Sampath and you take the wicket of the very next ball. So Aishi is up to Gaudesh. Here he comes ball to Yashwant. Oh, he was going for the scoop shot. He was going for that sky shot. Surya Kumar Yadav favorite shot in that fine leg region. But you need to practice it a lot. It doesn't come. Sky, becoming a sky is not a dream. It's a practice and it's a daily routine. This is in the air. He has not timed it well, but it lands safely. Lands safely and just a single. That will take the score to 15. Who is going to make it big here for the betting side? Who is going to hit those lusty ones, the big blows? In comes the last ball of the first over from Gaudesh. Once again, a false start here. You can see the LED screens here placed by the organizers, HEDBYA, and they have done a tremendous job. This is a new addition to this organization in this edition of Daivadnya Cup. This is played very nicely. And I guess whichever sponsors have given the sponsors for this tournament, they must have got enough publicity, and also they must have seen how the work has been done by the organizers. They are going leaps and bounds every stage, every year, and some new additions, new feeling coming into this tournament every season, every year. That will complete second over. The score is 16. 16 for the loss of 1 wicket. I know you are from that side, so Atana, this is not the right time to give. Amok bowler. No, Pritesh. Pritesh. It's not fair, रे. मैं यहाँ जाता. In comes the third over. Pritesh.
It's taking too much time to set the field here. Umpire has to intervene. Umpire has to intervene here. It's taking too much of time, and something has to come from the umpires. Absolutely right. Just cannot allow this movement to go along like this. And finally, after a long time, they have set the field. It's been ages coming. He goes for the big one. It is in the air. Wonderful placement here from Captain Pradosh. Yeah, just the previous ball, the previous second, got that man from long off boundary towards the mid off, and the ball lands safely in his safe hands. Second wicket down, and captaincy of Pradosh is also doing wonders here for KALIKA BARDEZ Warriors. They are well on course to enter into the semi-finals. Someone has to play a magical knock, a blinder knock, match-winning knock here for SWASTIK Warriors. Otherwise, this target is going out of the reach. He's go for the big one. Didn't time it that well. Might be a catch away from the reach of the fielder. He stops. No, just landing safely. Just landing safely and good fielding. Only a single given away. I guess winning the toss at a point of the time when it is almost 4:30, quarter to 5, electing to field first. I doubt about that decision. We'll come to know after this match gets over. Because what happens is the sun goes down, and the ball also, when sun goes down, the humidity is not there in the air, and that does not allow the ball to cross over for those sixes and boundaries. That's exactly what is happening here. We almost seen many a times during the evening part, the ball does not go for the sixes. So maybe that decision is hurting them at this stage, electing to field first. He goes for the big one. This time he times it well. Times it well and also in the gap. Just falling short of the boundary rope for 4 runs. But finally a intent shot. A shot that will raise the confidence of the batsman and also of the dressing room. Yes, we have got enough players left to chase this down. 21. Rahul is also helping me with the scores. 21. He has been doing a fabulous job all day long. Rahul Mehta, young cricketer from Goa, who is doing the job of the scorer at the moment in this Daivadnya Cup 2023. It's again very nicely driven, but throughout the ground. Carpet shot for only a single. That single will get Kunal on strike. Takes the score to just 22. Third over in progress. They have to hit many more. The singles can't help them at this stage. Just the boundaries and sixes. They are going for the big ones, but it's not the timing. The timing part is missing. Some aging, some ground shots. Each and every single will take KALIKA BARDEZ Warriors, or rather BARDEZ KALIKA Warriors, into the semi-finals. This is in the air and just going to be a single, another single. Bowlers are doing a fantastic job, just like how captain wanted. And captain is also marshalling the troops coolly and calmly from behind the wickets. And that's how third over comes to an end and is just 24 on the board for the loss of 2 wickets. 44 runs required. It means 22 runs per over required. 44, at least 5 sixes, at least 5, if not more, or maybe 8 boundaries. So in comes Pradosh. And Pradosh, whatever I know with the experience that he has, is not going to give anything easy
or he's not going to do anything silly at this stage in these quarterfinals. Oh, what a shot! What a wonderful flick here. Just on the legs, and that flick of the wrist, a powerful wrist here from the batsman coming to the rescue, and 6 over the square leg region. Can he score a few more? 1-6 out of the 5. Takes the score to 30. Anything is possible in the game of cricket. He goes for the big one once again. He says, I have hit one here. I'm feeling right. I'm feeling good at this moment after that 6. So let me take the strike. I hope he has not hurt himself. This time also he swings the bat hard way and misfielding here. Misfielding Pradosh, drifting down the leg side. Batsman saying thank you very much. So one of the boundaries also has come. 10 runs of the first 3 balls. Score moves on to 34. Another 34 runs required of 10 balls. Halfway past. Swastik Warriors, halfway remaining. He goes for the big one. This might be a mighty shot. No one patrolling that region. Pradesh is turning out to be costly here. He's bowling on the legs of the batsman. And this match is turning alive on this ground at Fatoda Stadium. What a match. Suddenly the complexion has shifted. Now the score is 40 and 28 runs required of 9 balls. 4 runs? Is it 4? Yes. Oh, 4 runs. 38 runs now. The 30 more runs required. Now there is a talk. Too much of time here. 30 runs required. Eight balls, 30. So out of the 22, 14 runs have come in this over so far. They still need more. Have they left it too late, or there is still some spark left in these Swastik Warriors? They are the Warriors. They have named themselves Warriors, so they have to play the fighting knock. They don't have to think now what is going to happen. They just have to hit out the ball out of the park. May it be any bowler. Play for the cause of the victory. Hey, that's the one. That's the one. Right in the slot and out in someone else's slot. Score moves on to 44. Still 24 more runs required. This match is still alive. Yashwant. Yash is the name. Can he get Yash to his Swastik Warriors? Success will be at the feet if he gets this ball out of the ground. Very expensive over from Pradosh. Yes, scores a good one. This is in the gap as well. And he gets a boundary. He gets a boundary and keeps the match alive in this last over. What a player. What a time to play this knock. A stunning quarterfinals here of the very first day. It started well. That completes the 4th over. The score is 48. 20 runs required in 1 over. 20 runs in 1 over. With the way the last over has gone, now there will be pressure on the bowler who is going to bowl the 5th over. If Pradosh, who is an experienced cricketer, has bowled an expensive over, the new bowler will think, where am I going to bowl this over? That's how cricket is. One time you are up, the next moment you are down. This up and down goes on in the game of cricket. Now, Yashwant versus Yash. Yash versus Yash. Let's see who gets the Yash.
It will be Kunal. Well, it's a catch-20 situation in the minds of Kunal at the moment, whether to take a single or whether to go for a boundary or a six. Because he has seen how well Yashwant has batted from the other end. And he will feel that it's better to give him the strike, or if there is a ball to be hit, then I'm going to go after the bowling. Last over, 20 runs required. He goes for the shot and might be a boundary. Gets the boundary. Misfielding once again in that region. Bowling on the legs. Once again a flick shot. And it's a tennis ball bounce. If you can't judge the length where the ball is landing, then it's difficult to adjust towards the height and the bounce of that ball. And that gives the 4 runs. 16 runs required of 5 balls now. 52 up here. 16 runs of 5 balls. He goes for the big one. Oh my gosh. What is happening here? What is happening? BARDEZ KALIKA Warriors are giving away this match by bowling loose balls. And both Kunal and Yashwant are grabbing this opportunity big time. Just 10 more runs required. Wow. Cricket at its best. Cricket at its highest level. 10 runs of 4 balls. He goes for one more. Can he go for 6 runs? Same player, but this time he takes the catch. Oh, I thought it was going for 6 runs. Look at the reaction. They also felt it was 6, but suddenly it came down inside. It's like a Pakistani missile which was launched in Karachi and landed in Islamabad. Landing inside their boundary. And that will still require 10 runs. Still require 10 runs, and that will keep Yashwant off strike. Who is going to be the new batsman? Yashwant is having a long talk with him, and I think he's having striker's name, please. Left-hander. So new batsman comes onto the strike after that new rule from ICC. Yashwant. 10 runs of 3 balls. 10 runs of 3 balls. Left-hander. Whether it's the right decision or wrong, I'll tell you after this ball. Batsman name, please. Vivek. Vinayak. Vivek. Okay. So Vivek, left-hander Vivek on strike. 10 runs of 3 balls. He goes for the big one, but Yashwant will feel the single is enough. Why left-hander? I was talking about that a breeze is flowing from the west towards the east side, from the Arabian Sea towards this part. And there are high chances if the right-hander was there, he could have used that breeze. But now Yashwant will be on strike, and he will be definitely trying to use that breeze for his good advantage. 9 runs required of 2 balls. This ball is going to decide the fate of this match. What an end to a grand start. Grand start of the Daivadnya Cup 2023, ending into the penalty made ball. If this goal for a boundary on the 6th, the match is going to be still alive. Yashwant would like to take the strike anyhow. 9 runs of 2 balls. Just 1 6 or a boundary, and Yashwant needs to be on strike. The
The way he has batted, match-winning knocks, taking the team almost close to the doors of the victory. Still not happening, still far away. Delhi is too far away. Yash to Yash. Oh, and Yash bowls a dot ball. Yash bowls a dot ball. What a time to bowl that dot ball at this stage. He has tried hard. He has fought like a warrior here. Yashwant of Swastik Warriors. I don't think so now. Yashwant is going to bowl any loose ball or no balls at this stage. 1 ball 9. Equation is out of contest. Still, anything can happen. Nobody is moving an eye. Everybody is concentrating at the middle of the pitch. Here comes the last ball of the day. And that's a wide. That's a wide. Still 8 runs are required. Still 8 runs. Can there be a twist in the tail? Can there be an anticlimax? One we have seen already with that wide ball. He goes for the big one. He hits a mighty one. And finally, what a knock here from Yashwant. He kept their team alive till the last ball. Fantastic performance here from Yashwant, and they lose by just 1 run.